Yeah, hello students. How are you? I hope you all are well, students. Today we will learn chapter number 10, and that is parameter and area. Parameter and area. Today we will learn parameter of irregular figures, parameter of regular figures, area of regular figures, area of irregular figures. Now let's start. Mr. Jogi likes to jog every morning. ये मिस्टर जोगी हैं और वो मॉर्निंग में उन्हें जॉगिंग करना बहुत पसंद है. नाउ ही जॉग्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क. वो कहाँ एक स्क्वायर पार्क में जॉग करते हैं, मीन्स जॉगिंग करते हैं. नाउ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर. अब इनका जो पार्क है उसकी एक साइड क्या है, 100 मीटर है. what डिस्टेंस ही कवर वन कंप्लीट राउंड. अब ये पूरा राउंड वो लेते हैं तो उनकी क्या डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस क्या होगी क्लास, अंडरस्टैंड. नाउ जो स्क्वायर होता है क्लास, उसकी 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है. नाउ टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर. वो डेली एवरी मॉर्निंग जॉगिंग करते हैं. नाउ लेंथ ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ रूलर. योर मैथ बुक्स, यू कैन यूज अ रूलर to measure of these lengths. Okay, your maths book, your school diary, your pencil box, your desk, your handkerchief, you can fill here. Understand class? Now class, parameter. Parameter, peri is a Greek word. Peri क्या है, Greek word है. It means around and meter. Peri का means क्या होता है, around, और meter means measure. So parameter means measuring around a figure. Measuring around a figure. Understand? Around a figure. Parameter is the total length. Parameter क्या होती है, उसकी total length होती है of the boundary of a closed figure. Closed figure. Okay. In simple word, the sum of the length of the side of plane figures is the parameter. The unit of parameter is as same the unit of length. The unit of parameter is same as the unit of length. Okay. Now parameter of irregular shapes, irregular figures or shape. Now to find the parameter of irregular figure, अब class C closed figure और regular, देख क्लास ये C, ये स्क्वायर और एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है. ओके, और रेगुलर फिगर्स है. नाउ इररेगुलर फिगर्स, C ये यहां से आप इसकी यहां से अलग होगी, इसकी साइड यहां से अलग होगी, उसकी लेंथ है ना. ओके. नाउ शेप सच एज लीफ, वी यूज अ स्ट्रिंग थ्रेड एंड कवर द एंटायर बाउंड्री. हम क्या करेंगे, उसका थ्रेड लेंगे, उसको कवर करेंगे उसके एंटायर बॉडी को, लाइक दिस ऑफ द लीफ. देन वी मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हम क्या करेंगे, अब उसकी जो लेंथ होगी उसकी स्ट्रिंग की, थ्रेड की, यूजिंग अ रूलर, हम उसे रूलर से उसको मेजर कर लेंगे. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज 10.1. फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ स्ट्रिंग. क्लास यू कैन यूज अ स्ट्रिंग एंड यू हैव टू put it like this. Okay, and then you have to measure it, this also. Understand? Now parameter of regular shape. Class, parameter of a triangle. A triangle is a simple closed figure. Triangle क्या है, closed figure है. क्या है, closed figure है triangle. Okay class, made up of 3 lines. अब देखिए class, 1, 2 and 3 segments, line segments which are its sides. ये इसकी क्या है, line segments है और उसकी sides है. Parameter of triangle ABC, 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 sum of all lengths of 3 sides, AB, BC और AC या CA. Understand? Now, example, find the parameter of the triangle whose sides are 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. Parameter of the triangle, sum of all length of 3 sides. Now, 4 plus 5, 9, 9 plus 6, 16. So, the parameter क्या हुआ, 15 centimeter हुआ. Now, parameter of an equilateral triangle. Equilateral triangle, a triangle with all sides equal is called an इक्विलेटरल ट्राइंगल.
उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ए प्लस AB, B plus AB plus BC plus CA. Understand? All sides are equal. Now हम क्या करेंगे उसको, AB 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 लिख सकते हैं हम उसको, क्योंकि all sides are equal. तो 3 into AB. So parameter of an equilateral triangle, parameter of an equilateral triangle is equal to 3 into साइड, जो भी उसकी साइड होगी। लाइक यहाँ पर मैं इस AB को 4 सेंटीमीटर बोल देती हूँ, तो 3 into 4, तो उसका पैरामीटर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड क्लास? नाउ एग्जांपल नंबर 2, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 into side, 3 8s are 24, 24 is the answer. Now parameter of a square, I square is a simple closed figure made up of 4 line segments. Okay, now which are its sides, all sides of a square are equal in length. So parameter of square ABCD, AB, BC, CD, DA. So 4 into AB. Now parameter of a square is equal to 4 into side. Example, find the parameter of a square field is 24 centimeter. So parameter of a square 4 into side, 4 into 24 is equal to 96 meter. Answer. Understand class? Now the parameter of a square field is 120 meter. Find the length of the side ऑफ स्क्वायर। क्लास हमारे पास क्या है, यहाँ पर पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर है हमारे पास, तो हम इसको क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। सो लेंथ क्या होगी, 30 मीटर। Thus the length of the side of the square is 30 meter. Answer. Parameter of a rectangle. A rectangle is a simple closed figure made up of 4 line segments. क्लास, और उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आर इक्वल इन लेंथ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, AB plus BC plus CD plus DA, AB plus BC plus AB plus BC, 2 into AB and 2 into BC means ये क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई, इसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length 40 centimeter and breadth 16 centimeter. Here the length 40 centimeter, breadth 16 centimeter. Parameter of rectangle 2 into length plus breadth. So we will 2 into 40 plus 16, 2 into 56, now 112 centimeter. Now students come on the exercise 10.2. Now find the parameter of given figures. So class, it is an rectangle. So find the parameter. Now, yes class, now question number 1, A part. Perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Understand? So class, what the length? Length is equal to 5 centimeter and the breadth is equal to 5.5 centimeter. Understand? Now 5 plus 5.5. Understand? Centimeter. Now 2 into 5.5 plus now 5 plus 5.5, so it is 10.5. Now 10.5 multiply by 2, 2 5s are 10, okay, 2 1s are 2, so it is 21. It is 21 centimeter. Answer. Understand class? I hope you all have understood very well. Understand? Understand? Now class, it is a triangle and it is, find its parameter. Now B part is equal to, now parameter of triangle
is equal to sum of all sides is equal 15.5 centimeter plus 6 centimeter plus 5.5 centimeter. 5.5 centimeter plus 6 centimeter plus 5.5 centimeter. Now add them. 5.5 centimeter, 5.5 centimeter and 6. 5 plus 5, 10, carry 1. 1 plus 5 plus 5, 10. 10 plus 6, 16. Now it will become 17. It is 17 centimeter. Understand class? It is answer. Yes class? Rest of the parts, do yourself. Now students, area. What is area? Circle the book that occupies more space. अब क्लास जो बुक बड़ी है वो क्या होगी, वो ज्यादा मोर स्पेस करेगी ऑक्यूपाई, तो it occupies more space. Now circle the painting that occupies more space on the wall. जो बड़ी पेंटिंग है वो ज्यादा स्पेस लेगी. Okay, the bigger book occupies more space. The bigger book on the table, similarly the bigger painting occupies more space on the wall. Understand, the area is the amount of surface that plane figure covers or occupies. Use units of area. Area is measured in square units of length. Square units of length. Area of square of side 1 meter is 1 square centimeter and or 1 square centimeter. A small square with side 1 mm has an area 1 square mm. Area of 1 square of side 1 meter, 1 square meter. A big square with side 1 kilometer has area 1 square kilometer. Now, area of regular figures. The area of plane figures is the number of square needed to cover it completely. This figure covered 12 squares completely. Each square has an area of 1 square meter. Area of the square, area of the figure 12 into 1 square meter, it is 12 square centimeter. 1 into 12 into 1 square centimeter is equal to 12 square centimeter. 1 C is written. Now area of a rectangle. Now look at the rectangle. What is the area of this rectangle? Let us count the numbers of squares enclosed. There are 18 squares. There are 18 squares. 3 square यहाँ से और इधर से यहाँ से 6. Okay, area of rectangle. Area of rectangle 18 square centimeter. 3 into 6. 6 into 3. Yeah, 6 into 3 or 3 into 6. Length of the rectangle into breadth of the rectangle. So area of rectangle is equal to length into breadth. Now example number 1. Find the area of the rectangle whose length is 9 centimeter, breadth is 5 centimeter. Here length 9 centimeter, breadth 5 centimeter. Area of rectangle length into breadth. So 9 into 5 is equal to 45 square centimeter. Class, we have to write square. Understand? Thus the area of rectangle is 45 square centimeter. इन एरिया आपको स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है. अंडरस्टैंड. नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर. द गिवन स्क्वायर इनक्लोज 9 smaller squares. The given square encloses 9 small squares. Okay, 3 भी यहाँ से और यहाँ से भी 3 squares. Area of a square 9 square centimeter, 3 into 3 square centimeter. So area side of the square into side of the square. So area of the square is equal to side into side. Now find the area of square whose side is 24. Now side of the square is equal to 24 centimeter. Area of the square side into side 24 into 24 square centimeter is equal to 576 square centimeter. Thus the area of the square is 576 square centimeter. Answer. Find the area of the following. Area of the each square 1 square centimeter. Now class, there is 3 squares. There is also 3. So 3 into 3 is equal to 9 square centimeter. Understand? Here is also 3 and here is also 3. So again 3 into 3 is equal to 9 square
9 square centimeter. Rest of the parts, do yourself. Now area of irregular figures. Irregular figures class, find the area of given shapes. Now class, irregular figures क्या होती हैं? जिसकी कोई फिगर नहीं होती, वो कहीं से भी कुछ भी होती है. लाइक सी, ये कोई फिगर नहीं है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ट्राइंगल है, ना ही ओवल है, ना स्फीयर है, कुछ भी इसकी कोई फिगर नहीं है. तो वो क्या होती हैं? इरेगुलर फिगर्स होती हैं. स्टेप 1, फाइंड द होल नंबर ऑफ होल स्क्वायर्स is equal to 2. Number of squares that are more than half is equal to 7. Now number of half square is equal to 2. 2 half square, 1 whole square. Ignore the square that are less than half. Less than half, जो half से कम है. Now add the number of square in the steps above the approximate area of the given shape. हम क्लास को एग्जैक्ट एरिया तो नहीं बता सकते हैं इसका, तो हम उसको क्या लिखते हैं? अप्रोक्सीमेट मीन्स लगभग. 2 plus 7 plus 1 is equal to 10 square. See, we have to count them. और जो हाफ से ज्यादा कम है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे. सो द स्क्वायर ऑफ दिस इरेगुलर शेप इज 10 square units. Now come on the exercise 10.4. Estimate the area of each irregular shape given below. Compare your answer with your friends. अब क्लास आपका सभी का आंसर इसमें क्या होगा? अलग अलग होगा. अंडरस्टैंड? नाउ आपको पहले ये वाला ऐड करना है, जहां पर पूरे पूरे स्क्वायर्स को ऐड करना है, और जो हाफ से ज्यादा है उसको आप इग्नोर कर देंगे. सिमिलरली आपको ईसीडी फिगर में करना है, बिकॉज दे बोथ आर इरेगुलर शेप्स. सो यू हैव टू डू योरसेल्फ. एंड class, now your chapter is completed. Prepare it very well. We will meet you in next class. Thank you.